Hello everyone, welcome to this video. This is Prasad Pandit, your mindset coach, your friend, your mentor welcomes you to this video. So ये वीडियो में आज हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में देखने वाले हैं, उसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं. So everybody is talking that about that thing right now everywhere in all the channels and everywhere. You see that whenever you open your Facebook account or your YouTube account or wherever you go, on a digital world. सो व्हाट इज डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप. यस गाइस, हम बात करने वाले हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में. काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी और एंड द पीपल आर आस्किंग व्हाट इज इट एग्जैक्टली और उसको चालू कैसे करते हैं, उसको अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो आई थॉट लेट्स मेक द वीडियो एंड देन लेट एवरीवन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एग्जैक्टली डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप. सो सबसे पहले तो देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है. So entrepreneurship is a journey of giving your knowledge, your expertise to someone else who is in need of that thing. So basically, developing a business, developing a product, and selling that product, and working for yourself and earning money. That is what all entrepreneurship is all about. So entrepreneurship is ऐसा नहीं है कि कोई existing business है उसको follow करना है और उससे पैसा कमाना है. That is a business. So entrepreneurship is creating something of your own, developing your own niche, your own identity, your own identity in a market overall. So that is what the entrepreneurship, and we are needed that kind of entrepreneurship right now in a world. So this is about the entrepreneurship. So what is a digital entrepreneurship? So digital entrepreneurship is entrepreneurship which is happening online, on a online space. That is the simple मीनिंग ऑफ अ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप. सो जो ऑनलाइन स्पेस में हम काम करते हैं, ऑनलाइन स्पेस में जो रिवॉल्यूशन लाते हैं, ऑनलाइन स्पेस में जो हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे सर्विसेज लोगों को डिलीवर करते हैं, लोगों के लाइफ में चेंजेस लाते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप. सो आई होप कि ये आपको एकदम क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप. सो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, काफ़ी सारे एंगल्स है लुकआउट करने के. तो सबसे पहला एंगल जो है दैट इज वर्किंग स्मार्ट ऑन अ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू आर जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा और योर सिस्टम and then delivering the values, delivering the products, delivering the services to the your target market. So this is one of the biggest way to work smart, this is digital entrepreneurship. क्योंकि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, अगर वहाँ पे हम देखते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड में बहुत बार ऐसा होता है कि यू हैव टू रीच टू द पीपल, यू हैव टू बी इन अ मार्केट to sell something. You have to be at office where you are delivering your seminars, you have to be at place where you are exchanging your talent and time in return of money. But over here you have to work smart. There are some systems and there are some tools which are there specially for the digital entrepreneurship, where you will be using these systems for you will be creating first this system once, and then you will be using this system, or that system is going to help you to develop your business and your entrepreneurship journey till the wherever you are going. That is the thing. So there are various platforms and there are various marketplaces also on this digital entrepreneurship world. So we are just going to make different videos for each and every topic of this and going detail into it, but I just wanted to give you like 10,000 feet overview about it, ki what this entrepreneurship is all about. So there are platforms and there are marketplaces. जैसे हमारे एरिया में सब्जी मंडी होती है या रिटेल होलसेल ग्रोसरी मार्केट होता है and the stuff like that. So malls होते हैं. So these are the marketplaces in a physical world. So there are marketplaces on the digital platform also, and then we have to understand how to use these marketplaces, how to get the clients from these marketplaces, how to have our presence on these marketplaces and markets in the online hub. So this is understanding all about these markets and these various platforms is all about the digital entrepreneurship. So I hope you are just getting a difference between digital entrepreneurship and offline entrepreneurship. This is what amazing stuffs are happening right now, and
there are no boundaries or there are no limitations on the digital प्लेटफॉर्म और डिजिटल ऑन्टरप्रेन्योरशिप. क्योंकि आप अगर आपका बिजनेस चालू करते हो, ऑफलाइन बिजनेस आई एम टॉकिंग अबाउट, then you have a boundary of let's say 3 kilometers. Like I'm into the restaurant industry, so my restaurant business is limited to the 3 to 5 kilometers only. So I'm not going to get clients beyond that limit. Digital entrepreneurship is not that way. You can reach up to as many people as you want. This is the beauty of a digital entrepreneurship. You can be having the clients from all over the world, literally all over the world. So I'm just delivering these values. I'm also always delivering these, making these videos and bringing in front of you. So I'm getting the viewers from US, I'm getting viewers from Europe, from Australia, and of course from India also. So you are reaching to these many people already. That's why that boundaries are not there. You can, if your product is really good and helpful to people, then you will be getting sales from anywhere in the world. So this liberty is never can happen on the offline market, where you will be having 3 to 5 maximum 10 kilometer radius, where you have to play yourself and then you have to fetch the business from that area also. So this is one of the very good advantage and beauty of digital entrepreneurship. So yeah, I'm just enjoying this journey a lot, and I want to help as many people as I can to become a digital entrepreneur, giving them the insights and changing their lives. And this is the passion, this is my passion, and I'm enjoying it thoroughly. So it is like very easy to target your audience also. So by the digital media. So there are emails, there are social media platforms such as Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, and or many others. So from these platforms you can actually target the mass audience at first, and then to niche audience also. So what is niche? Niche मतलब क्या है? तो आपका specific market, आपका specific target, जो जिसको आप आपका product जो है वो बेचना चाहते हो, तो वो बेचना मतलब वो particular target audience को बेचना, that is the niche. So it is very important to have the niche in offline business also and on a digital platform also. So you are having these ह्यूज मार्केट इन फ्रंट ऑफ यू टू टारगेट. जैसे कि आपका ऑफलाइन बिजनेस है, तो ऑफलाइन बिजनेस में हमारा 3-5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स के रेडियस के आगे मैक्सिमम नहीं जा पाते हैं, और उनको पहुंचने तक का भी हमारे पास जरिया नहीं रहता है. लेकिन नाउ एवरीबडी इज हैविंग द स्मार्टफोन इज हिज पॉकेट, एंड एवरीबडी इज ऑन इंटरनेट, एवरीबडी इज ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड इट इज ग्रोइंग. लाइक इंडिया में अभी भी हार्डली 15-20% ही जो पॉपुलेशन है वो इंटरनेट यूज़ कर रही है, और जो सोशल मीडिया है उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर रही है. बट इट इज़ गोइंग टू ग्रो. थिंक अबाउट 5 years फ्रॉम नाउ, थिंक अबाउट 10 years फ्रॉम नाउ. अभी हम 2020 में है, थिंक अबाउट 2025, 2020, 2030. दिस इज गोइंग टू ग्रो लाइक एनीथिंग. एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एंटरिंग ऑन टू इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आप बहुत सालों से सोच रहे लेकिन आपको चांस नहीं मिला है, तो दिस इज योर राइट चांस टू गेट इनटू. क्योंकि आगे आने वाले 10 साल जो है, इट इज गोइंग टू बी मैसिव फॉर इंडिया एंड द एंटरप्रेन्योरशिप मार्केट ऑल टुगेदर, वेयर वी कैन हैव आवर ग्रोथ एंड एवरीथिंग डन टू द ट्रिमेंडस level and tremendous potential. So these are some good advantages of digital entrepreneurship, and this is overall 10,000 feet overview of digital entrepreneurship. Let me check if I have covered all the point. One more point, that digital entrepreneurship enables you to get exposed to your massive systems. क्योंकि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का फंडा ही है सिस्टम्स. अगर आपके पास सिस्टम्स नहीं है तो यू कैनॉट सक्सीड इन अ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप. आप मे बी ऑफलाइन मार्केट में सक्सेस पा भी सकते हो अगर आपके पास अच्छा सा सिस्टम्स नहीं है, लेकिन नॉट इन अ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप. सो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में आपका जो
पूरा क्या बोलते हैं जो सिस्टम है पूरा, सॉरी पूरा बिजनेस है, दैट इज ऑन दीज सिस्टम्स ओनली. And then this is very positive sign, because I always say, my mentor always say that, and I follow him, that people fail, system don't. So हमें लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना है. क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि they are humans, they can make errors, they have the emotions, they have the anger, they have the happiness, they have the n number of things going in their mind. So productivity कम हो जाती है. You cannot give 100%. We are not a robots, we are human beings, so we have all these things inside us. बट सिस्टम्स का ऐसा नहीं है. सिस्टम्स एक बार आपने सेट कर दिया, आपने आपका ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम सेट कर दिया, तो यू हैव टू जस्ट रेस्ट अश्योर आपका सिस्टम वो हमेशा चलता जाएगा. इफ यू हैव सेटेड योर फनेल बिल्डिंग और लीड कैप और लीड जनरेशन सिस्टम, वो अपना अपना चलता जाएगा, वो कभी ये नहीं होगा. आपका पेमेंट गेट्सवे है, तो पेमेंट गेटवे आपने एक बार सेट कर दिया तो वो चलता ही जाएगा, उसमें कुछ बिगाड़ नहीं होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट मेक द चेंजेस इन दैट. So this is how you have to set these things once and then forget about, just they are like autopilot में वो जाते रहते हैं. You don't need to just go on a daily basis. You just once in a month you just go there, you just see what is going on, do little bit of updations and all, and you are good to go. So these are the things which are the advantages and the best things to get on the entrepreneurship, digital entrepreneurship. सो आई होप कि आपको ये इनसाइट्स मिले होंगे अच्छे तरीके से कि व्हाट इज़ ऑल डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट, एंड हाउ डू वी गेट ऑन टू दैट. सो उसके और बहुत सारे बेनिफिट्स है उसको वो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप चालू करने के बहुत सारे कुछ तरीके हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स यू विल बी एबल टू लर्न ऑन द प्लेटफॉर्म कॉल्ड 5% हब. सो 5% हब is a community, is a learning and development platform for the aspiring entrepreneurs as well as the existing entrepreneurs, maybe who are offline right now and wanted to grow, come on the digital platform and grow their businesses to the next level. So this is the all people can come to the 5% hub. There is a link below, so just you just get registered yourself for the 5% hub. So whenever we are having lot of events are happening, webinars, meetings are happening, knowledge given sessions are happening, teachings are happening, so you will be connected and you will be getting the benefit of all these for free 100%. So there are no any charges, there is nothing. You just have to click on a link below and get yourself registered with the 5% hub, and then we will be always giving these values, these golden nuggets, the things to improve your ability, your mindset, your entrepreneurship skills and knowledge, and to help you to success basically. So don't waste any more time, get into the entrepreneurship. I am there to support you always, and don't matter, it is not matter कि which business you are having. आपका कौन सा business है उसको matter नहीं करता, क्योंकि this platform is for all the businesses. So ये platform ऐसा नहीं कि इसमें only hospitality या तो marketing या तो sales और any other specific industry के लिए ये platform है नहीं. This is all about developing yourself and your business, whichever business you are having. So just come in and then you will understand, you will feel what it is all about. And then we are also having the inner circle calls on every week. We are having that inner circle meeting where all of us like comes together on online space, and then we discuss various topics, we discuss mindset, we exchange knowledge, we support each other, we connect two people from same industry to connect together, and then and helping each other, and then amazing stuffs are happening at 5% hub. So I wish to see you all inside, because it is all for you, it is not for me. I am just a facilitator. I just wanted to share my learnings, my knowledge with you, and I want you to grow in your life. I want you to get out of that beating around bush kind of a situation. वहीं पे घूमते रहते हैं, जब भागते रहते हैं, लेकिन कहाँ पे पहुँचते नहीं ज़िंदगी में. वो जो सिचुएशन से उधर से बाहर निकलना है, and get started with the real life, because there is a lot to learn, there is a lot to go, there is a lot to achieve. वो हमारे आज नज़रों के सामने भी नहीं है, उतना सब वहाँ पे है करने के लिए. So don't feel depressed, don't feel कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया. There is opportunity, this is opportunity. 5% hub
इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, राइट गाइज। सो आपको अगर लगता है कि आपके किसी दोस्त को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके कलीग्स को ये प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है टू स्टार्ट द जर्नी और जस्ट hanging around, so just share that link with them also, let them also come on the this 5% hub community, and then they can start their journey. So because there are people who are needing this kind of platform, this kind of support, this kind of knowledge for sure in the market, वो मुझे पता है क्योंकि गई 10-15 सालों से मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। आई एम मीटिंग लॉट ऑफ पीपल, they are just eager to learn and they don't know how to where to learn and how to go ahead and all this stuff. So किसी ना किसी को तो इसकी ज़रूरत है फॉर श्योर। तो आप जितने भी लोगों के साथ ये स्प्रेड कर सके, शेयर कर सके, प्लीज़ कीजिए। आपके कुछ कमेंट्स है, सुझाव से, तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। एंड आई विल सी यू अराउंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।